Hello everyone, welcome to the post-contest discussion of Codeforces round 855 Div 3. Uh, A and B will be explained by Priyabrot Dwar. Priyabrot, you can start. Okay, thank you. Uh, is my screen is visible? Yes, visible. Okay. Then this is the problem number one. Here we have the given the statement like this, that there is a sound described by a string S in either lowercase or uppercase Latin characters. Now we find that the sound, is it a cat meowing sound or not? So there are some of the condition written there, that the sorry, the string must be string started from M, or small m or capital M, and then it is followed by small e or capital E, and then it is followed by small o or capital O, and again this is followed by a capital small w or capital W. So here are some of the example. So in this question we have to proceed like this, that first we take the input, that suppose the input is like this, then M E E O O W W, and then M O, suppose that. So first, the first thing, that is the simple thing, we uh, have to do the every element in the string, we have to lower convert it to the lowercase. Like in this array, this M, this W, this W, these are in uppercase, so we have to convert it into the lowercase. So now the string becomes like this: E E O O W W M and O. Then our task is to find whether it is a meow sound or not. So for that, there are some of the repetitive M. So there is no meaning of these two M, because uh, hello, hello, am I Um, audible? You're audible. yes, you are. Oh, okay, okay. In this case, we have to do that. We have to check the whether the string represent a meow sound or not. For this, first we have to traverse through the string. And for my approach, I am doing like this. I compare the two elements. If the element are same, then I do nothing. If the element are different, then I push the element into a vector of character. Uh, for in this array, I do like this. First I compare these two elements, and these two elements are same, so that's why I do nothing. Then again I compare these two elements, then these two elements are also same, so I do nothing. then उसके बाद में ये दोनों element को compare किया, तो these elements are different, so then I push uh, m into a vector, so now my vector is look like m. Then I compare this e and e, so now it is similar, so I do nothing. And uske baad I have compared that e and o. Then now e and o are different, so I push e to the vector, and then I compared o and o again. So now these characters are same, so I do nothing. And then I compared o and w. Then the o and w are different, so I push w. Again I repeat this process for whole string, and after that my vector would look like this. And after that I check whether the vector is of size 4 or not. If the vector is size 4, is not size 4 like size 3, 5, 6, that then the answer is no, because we don't get this meow, and we get other elements rather than this 4. So if we get like meo, then it is obviously no. If we go get meo wm, this type of case,
in this type of case, the answer is no. Here also the answer will be no because we get m and o, which m and o extra. So after that, if I found that the size of vector is 4, then we compare the vector that the first element should be. If the vector is, if the first element of the vector is m, then the second element is e, then the third element is o, and the fourth element is w, then then it is sure that the sound is type of meow. Or if any other case like m, e, w, o, or other any possibilities, the answer will be no because it is not a meow sound. So this is the code. Mm, this is my code. First, I transform the string into lowercase. First, I transform the string into the lowercase, and after that, this is the vector of character. Then I compare that the if the two consecutive element of the string is not equal, then I push back that character into the vector. And after that, if I check that the if v dot size equal to 4, then I check that first element is m, second element is e, third is 0, and o, and fourth is w. In that case, the answer will be yes, and all other cases the answer will be no. So this is the first problem. So now this is the second problem. In this second problem, the problem statement is we are given a string of size s and a value which is denoted by k. And here are some of the constraints that for each pair of lowercase letter and its matching uppercase letter, Christina can get one word. And however, the pairs of characters cannot overlap. मतलब हमको एक स्ट्रिंग दिया है जो कि स्ट्रिंग में अपर केस लेटर भी है, लोअर केस लेटर भी है. सपोज हमारा स्ट्रिंग ऐसा है ए कैपिटल बी ए सी सी डी ऐसा कुछ. तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हमें एक स्मॉल ए मिला और हमें एक मतलब भी अपर केस ए भी मिला, तो हमारा मतलब क्रिस्टीना को एक वर्ड मतलब मिल जाएगा. अगर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर यूज हो गया और वो दूसरा केस पे भी यूज हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे ये जो कैपिटल ए है, ये एक बार यूज हो गया तो ये इसके साथ यूज नहीं हो सकता, मतलब इसके साथ वो पेयर नहीं बना सकता. तो उस केस में हमको निकालना है कि लास्ट में बाल कितना मिलेगा. और हमें उसके अलावा और एक के का वैल्यू दिया हुआ है, जिसके मतलब अगर के जितना बार है, के सपोज 2 है, तो हमको 2 बार चांस मिलेगा कि कोई भी एक लोअर केस लेटर को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर पाएंगे, और या फिर कोई एक कैपिटल लेटर को हम मतलब लोअर केस में कन्वर्ट कर पाएंगे. ये दोनों हमारे पास ऑप्शन रहेगा. तो वही हमको लास्ट में वो सब ऑपरेशन मतलब कंडक्ट करने के बाद कि को एक नंबर एक मतलब लेटर को अपर केस या फिर एक लेटर को लोअर केस, वो सब करने के बाद कितना नंबर ऑफ पेयर मिलेगा वो पूछा है. तो यहाँ पर ये जैसे कि फर्स्ट जो टेस्ट केस है वहाँ पे क्या दिया है कि 11 जो स्ट्रिंग का साइज है वो 11 है और के का वैल्यू 2 दिया है. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सपोज जो है ए ऐसा है, तो हमारा पेयर इस टेस्ट केस को लिख लेते हैं. जैसे कि इस टेस्ट केस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये ए के साथ ये एक पेयर बन जाएगा. जैसे कि उसके बाद ये इस ए के साथ इस एक पेयर बन जाएगा. तो उसके बाद बी के साथ ये बी, सी के साथ ये सी, और उसके बाद हमारे पास ये जो ए है और ये जो ए है, इनको इनमें से किसी एक ए को में
कैपिटल में कन्वर्ट कर पाऊंगा, और कन्वर्ट करने के बाद वो दूसरा वाला ए के साथ एक पेयर बना लेगा। ऐसे हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या अप्रोच लिया कि मैंने पहले 2 वेक्टर लिया, जो एक वेक्टर लोअर का था, एक वेक्टर अपर लेटर को मतलब कंसीडर करने के लिए था। जैसे कि ये एग्जांपल है कि ए बी बी सी डी ऐसा है। तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया जिसका नाम मतलब जो लोअर केस लेटर को रखेगा और एक अपर केस लेटर को रखेगा। तो मैंने पूरा एरे में ट्रैवर्स किया। तो जब भी मुझे एक स्मॉल ए मिला, मतलब स्मॉल लोअर केस लेटर मिलेगा, तो मैं ये वाला वेक्टर में उसको पुश करता जाऊंगा। जैसा कि पहले ए मिला तो उस ए डाल दूंगा, दूसरे उसके बाद फिर से ए मिला तो फिर से ए डाल दूंगा। उसके बाद जब कैपिटल ए मिलेगा तो वो कैपिटल ए को मैं दूसरा वाला जो अपर वाला वो वेक्टर है उसमें डालूंगा। लेकिन उसमें डालने के वक्त मैं उसको मतलब स्मॉलर केस में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये आ जाएगा। इसको भी जब मैं अपर में मतलब इंसर्ट करूंगा तो उसको स्मॉलर केस में कन्वर्ट कर लूंगा। उसके बाद ये बी को यहाँ पर, ये बी को यहाँ पर, ये सी को यहाँ पर, ये सी डी को यहाँ पर वो कर लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप चला के लास्ट वाला एलिमेंट मतलब लास्ट से स्टार्ट करूंगा और एलिमेंट को कंपेयर करते जाऊंगा। अगर किसी पॉइंट में ऐसा हुआ कि मैंने पहले ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट को कंपेयर किया, अगर वो दोनों सेम हो गया तो सही है, क्योंकि सेम हो गया मतलब ये पेयर एग्जिस्ट करता है, तो जो आंसर है आंसर में +1 हो जाएगा। अगर मतलब इक्वल नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट मतलब बड़ा है। यहाँ पे जैसे डी सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है। तो और एक बात, जो ये वाला मतलब ये लोअर और अपर में डालने के बाद हम इसको एक बार सॉर्ट भी कर लेंगे, ताकि वो मतलब ऑर्डर मेंटेन रहे। ऑर्डर मतलब हम ट्रैवर्स करके ठीक से देख पाए, वो पहले सॉर्ट कर लेंगे। तो हम अगर ये तो अभी सॉर्टेड ऑर्डर में ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हम पहले उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद हम लास्ट से एक-एक को कंपेयर करते जाएँगे। अगर सही मतलब सेम रहा तो आंसर में +1 कर देंगे। और उसके बाद अगर सेम नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि कौन-सा एलिमेंट बड़ा है। जैसे कि इस केस में जो डी है वो बड़ा है। तो डी बड़ा होने के बाद हम एक बात तो कन्फर्म कर सकते हैं कि अगर ये डी मतलब सी से बड़ा है, तो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि डी से बड़ा होगा। क्योंकि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ये स्ट्रिंग लोअर वाला स्ट्रिंग का सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगर वही डी से छोटा हो गया तो पहले का एलिमेंट तो कोई मतलब उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम जो इसका काउंटर मतलब ये जो यहाँ पर जो पॉइंटर था वो पॉइंटर को यहाँ से हटा के यहाँ डाल देंगे। तो उसके बाद फिर बी और सी कंपेयर होगा। ऐसे करते-करते पूरा कंपेयर करते जाएँगे। और बाद मतलब अगर 2 कैरेक्टर जैसे कि ये और ये सेम मिल जाएगा, तो सेम मिलते ही हम उन दोनों को 1 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब मैंने ऐसा अप्रोच लिया था, जैसे कि यहाँ पर ए, बी, सी, ए, बी, डी है। तो पहले हम तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ये दोनों को कंपेयर करने के बाद डी बड़ा मिल जाएगा, तो डी का जो पॉइंटर है वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन सी का पॉइंटर अभी भी यहाँ पर ही है। अभी बी और सी कंपेयर होगा। बी और सी कंपेयर होने के बाद सी बड़ा हो जाएगा बी से। तो फिर ये वाला पॉइंटर को यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा देंगे। अभी बी और बी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है, आंसर में प्लस कर देंगे और उसके बाद ये बी को रिप्लेस कर देंगे 1 और 1 से। उसके बाद जो ये मतलब उसके बाद ये दोनों पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद ये भी सेम हो गया तो 1, 1 दे देंगे। उसके बाद ये भी सेम हो गया तो 1, 1 दे देंगे। उसके बाद हम अभी हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर कुछ इस प्रकार से है 1, 1, 1 सी एंड उसके बाद 1, 1, 1 डी। उसके बाद हम दोनों जो वेक्टर है उसमें एक बार ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने के वक्त हम दो मतलब कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो दो एलिमेंट सेम है क्या। लेकिन अगर 1 रहा, जैसे कि इस केस में 1 और 1 सेम है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 1 हमने बनाया है, वो पहले से 1 नहीं था। तो इसीलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो हम मतलब ऐसा करेंगे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट अगर सेम हुआ और वो 1 नहीं हुआ, तो आंसर में 1 प्लस कर देंगे। जैसा कि अगर दूसरा कुछ एग्ज़ाम्पल हम लें, जैसे कि अ
एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ए ए ए ए बी और दूसरे में है ए बी, ऐसा है। तो इसमें पहले ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे। ये दोनों कंपेयर होने के बाद यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ये रिप्लेस होके 1 हो जाएगा, ये रिप्लेस होके 1 हो जाएगा और उसके बाद ये वाला पॉइंटर यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों भी सेम है तो इसको भी हम 1 से रिप्लेस कर देंगे और इसको भी हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। अभी हमारा जो ये मतलब वेक्टर लास्ट में बसा होगा वो ऐसा कुछ रहेगा, ए 1 1 और दूसरा वाला 1 और 1। तो हम पहले जो ये वाला लोअर वाला वेक्टर है वो वेक्टर को एक बार ट्रावर्स करेंगे। ट्रावर्स करने के वक्त हम दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो सेम है क्या। अगर वो सेम हो गया तो आंसर को हम प्लस कर देंगे और जो ये मतलब पॉइंटर है ये पॉइंटर को यहाँ और यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो उसके बाद ऐसे पूरा ट्रावर्स करते जाएंगे। अगर दो दो एलिमेंट सेम होता गया तो हम आंसर में प्लस करते जाएंगे और उसके बाद जो ये पॉइंटर है पॉइंटर को दो दो घर से आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा करते जाएंगे। अगर लेकिन वो जैसा कि इस केस में 1 और 1 सेम है तो हमें मतलब दोनों एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट सेम तो है लेकिन ये 1 है तो इसीलिए हम प्लस नहीं करेंगे। वो प्रोसेस से मैंने किया है। तो मेरा कोड मेरा ये कोड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले स्ट्रिंग को ले लिया और मैंने पहले ही उसको सॉर्ट करके ले लिया। उसके बाद क्या किया, जो लोअर और अपर एक करके मैंने दो मतलब वेक्टर ले लिया जो कि कैरेक्टर का वेक्टर है। अगर जो कैरेक्टर है वो स्मॉलर केस में है, ए और स्मॉल जेड के बीच में है तो मैं लोअर में पुश किया। और अगर वो मतलब बड़ा है क्या अपर केस में है तो मैं अपर वाला जो वेक्टर है वहां पे पुश किया। लेकिन वहां पे पुश करने के बाद मैं +32 इसीलिए किया हूँ कि +32 करने से मतलब हाँ 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 हाँ, लॉजिक समझ गया। कोड नहीं दिखाने भी वो कर लेंगे लोग। इसका थोड़ा ओके इजी ओके अप्रोच ठीक भी है, मतलब पॉइंटर नहीं करके भी होगा। तो ओके ओके लाइक जो लाइक जितना मतलब स्मॉल कैरेक्टर से और बड़ा कैरेक्टर से, जैसे कि ए और कैपिटल ए, उसका मिनिमम काउंट कर लो और मैक्सिमम का डिवाइड बाय 2। तो अगर के में आता है तो के में ये कर याद कर दो। ओके ओके ओके, तो सी और डी विजय एक्सप्लेन कर देगा अभी। थैंक Hello. Is my screen visible? हाँ हाँ Okay. So in C, we have basically two questions, C1 and C2. Both are basically the same problems. The only difference is in the constraint. So let's understand what the problem says. We are given a deck of n cards, and there are two types of card. One is hero card, whose power is always equal to 0, and the other is bonus card, whose power is always positive. So from the test case, we can see like the first three are our bonus cards and the remaining two are hero cards. So what we have to do basically is that we have to take a card, and if it is a bonus card, we can put it on the top of our bonus deck. And if it is a hero card, then the power of top card from our bonus deck will be added to this power. And it's in simple words, like if these three are our bonus card and this is our hero card. Whenever we get a hero card, we'll just add the power of bonus card, which is 3 in this case, to our some variable. Suppose we have a variable called power, we will add 3 to it. Again, we have got another hero card, so we will again add 3. So the answer in this case will be 6. In second test case, we can just with 0 hero card. So at this point of time, we do not have any bonus card. That's what they have said here. Like if it is not empty, as of now, our deck is empty because we have not received a single bonus card. So in this case, the first hero card, we cannot add any power. So now we have add 3 and again we got a 0. So in this case, we can add 3 to the army and again a 0
So we can add one another 3. So this time the answer is 6. In third test case, we can see when we will receive the first 0. Okay, so before that we will see what is the maximum power, since we want to maximize this, as it is said in the question, the maximum possible total power of the army. So when we receive the first 0, we will just add the maximum power received so far, so which is 3 in this case. When we receive the second 0, we will see the maximum power, which is 5. So the answer is 3 plus 5, 8. We'll go in the same manner. Like in this fourth test case, our answer will be 5 plus 9 and not 5 plus 3. So 5 plus 4 will give us 9. So the simple approach to this can be using priority queue. So let's see the code for this. Uh, so I think you all can see my code. Okay, so using priority queue, we can solve this. For example, we have taken this input, and if it is 0, it means it is a hero card, then we will just add the power in our answer variable and remove it from the priority queue. And if it is a non-zero, it means it is a bonus card. We'll simply push the value into our priority queue, and this will give us the answer. This is very much simple, and the same solution for the next problem, which is the hard version of this. We have the same code for both the problems. So I hope this one is clear. So let's discuss problem number D now. In D, let's see the question. We are given a string S, okay, and then we have to remove two consecutive characters from the string, and after removing two consecutive characters we can generate different strings. So we want to find the number of such strings we can generate. For example, in this first test case, we can remove the first two characters to generate a string a b double c. We can remove the second and third character to again generate the same string a b double c. Similarly, we can remove the third and fourth character to generate a string double A double C, and fourth and fifth character to generate triple A C, and then the last two characters to generate a string triple A B. So basically, we can generate four different strings in this case. Like when we have all the characters in the string different, in this case, if we count, we'll get 5 strings. And so from this we can conclude, like if we have a string of length n and all the characters in the string are different, then our answer will be n minus 1. But in most of the cases we have our some characters repeating in it. For example, in the first test case we have 3a and 2c, and in this case the answer is 4. But if all the characters here would have been different, then in this case the answer would have been 5. So let's see where the problem is. We can see that the first and third character matches. So it is only one time in this test case that the first and third character matches. For example, in test case number 4, we can see the first and third matches, third and fifth matches, fifth and seventh matches. So there are total 3 such odd matches. So the length of string is 7. The output could have been 6 if all the characters were different. But since 3 characters at the for odd position matches, so the answer is 6 minus 3, which is 3. Like in the last test case, we can see the string is of length 5, and the first and third matches, second and fourth matches, third and fifth matches. There are 3 such matches. So the answer will be 5 minus 1 minus 3. So that is the answer is 1. And why it is so, it is very much clear. So let's see the code for this, which is very simple, I guess. We just need
to run a loop from I equal to 0 to I less than n minus 2, and if si equal to si plus 2, we will just add count, increment count by 1, and then return n minus 1 minus count, and this will be the answer for this. I hope it's clear. Thank you. Yeah, so now I'll explain E1, E2. Wait, I'm sharing my screen. Is my screen visible? Yes. Okay. So I hope it is visible now. So the question in E1 and E2, I hope you people have read the question, or I am explaining it once. So we were given two strings. Its length was given, and a number k was given. Wait, I'm telling what to do with k and the two strings that were given. Now, for a given number k, in case of E1, it was fixed. It was equal to 3. There is not much difference in E1 and E2 for only for the fixed value of k. For this value 3, what we can do was I can swap a letter that was at position I with another one that was at position I plus 3 or I plus 3 plus 1, that is I plus 4. So maybe I can choose T and swap it with A, or I can choose T and swap it with N. Now I can do this with any of picking any I in this 0 to N string. So what I could, how to approach this question. Now, if I start with the first test case, it was TALANT, and we had to make this by swapping with the given procedures that I just explained, and we needed to make S is equal to T. And the procedure I just mentioned, you can apply that any number of times. Now, if I start my explanation, I could begin with, if I start with T, where can I swap this element and place it in this string? So maybe I can start with here and place it 0 plus k, that is here, for k equal to 3 I am picking. That is even question. Or maybe I could have picked this element and swapped with this element. So the new array would have become, new string would have become, if I have swapped with A, it would have become A, T, A, L, N, T. Or if I had swapped with N, it would have become A, T, A, oh no, N, A, L, A, T. Okay. So this was the two cases where I could have swapped my T. Now, if I proceed with this string can give me this T, like A equal TT equal. Now I need to change it to L. How can I change my T to my L to A? I had to swap it with another character. How can I do it? Let me show you. So yeah, I swapped T with A, that become A and T. Then again I swapped this A with this T. Then it had become Atlanta, whatever it is. So this was my question. Now how to approach this question? So yeah, maybe I can start with what I had done. So T A L A N T and A T L N A T L T N A. Yeah. So if you see, I can change this T to here or here. Yeah. If I change it to here,
then again I can change that T to here or here. So you can see I can place the T to here and then again I can place it here. So you can see T is T can occupy this place or this place or this place or this place. Again, if it had occupied this place, again I can swap. So I can swap it with this or this. If I swap it with this, this T can come here also. So I can swap my T with, I can place it here, 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 or here. Now since I placed it here, I can again swap it here. So my T can be placed anywhere in the string by doing any number of operations. Similarly, A can also be placed anywhere in this string L, A, and M, and T, and so on. But this was true only if the size is n is equal to 6. If it was somewhat smaller, then I would have not been able to place any element anywhere in the string. For example, if I take this character A, C, C, I, O, and C, I, C, A, O. If I start with A, I can place it here or I can place it here. Now, if I place it here, then I can move it to this position. Yeah, if I move to this position, then again I can move it to here, or there is no character here. So the final position where I can place my A is this, 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 and this. Now I cannot place my A here, if you notice. Similarly for C, I can place my C here, here. Now if I place my C here, then I can move it here or here. Then my C can be placed in this position, this position, this position. And since I have placed my C here, I can again put it here. So these are the 4 positions that can be interchanged. I cannot touch this position. I cannot move it anywhere else, or I cannot move other elements in this position. So it might be clear. So what you can say is this was true if n was 5 and my k was 3. So if you notice, for my k equal to n by 2, or I must say if my n is greater than equal to twice of k, then I can swap all the elements in the string. And if my k is if my n is less than twice of k, then I have some constraint and I can move only some of the elements to some positions, and the other are fixed. I cannot move them. So how to code this in code? We can start by, I'm showing my code. Yeah, so this was my code. I know it's very small, but I'm trying to explain what I did here. This was my question. Now I explained for k equal to 3, but you can take k for any value or any value of k. Now this code here, if you see, I taken the input s and then t. Now I have declared a variable m. Now what is this m? This m was the maximum position where I could have changed my character to. Like if I'd taken, wait, let me do it with this. Now if I'd taken A, I could have placed it till after and starting with this position. That is, if I'd taken this A, I could have moved it to K or K plus I indices, not less than this K index. That is being stored by this M. Now it can be less than 0. How? Yeah. So maybe this can do. Yeah. If I start with here, I told that I can place it anywhere. I place this element in anywhere in the string.
So if I see this code n minus k, what is this? N is 7 and k is 1 for this value. So I can place it till here or then or anywhere like 7 minus 1 6 or in all the positions in all of these positions. So basically I can interchange all the elements if the count of all the alphabets are equal in both the strings. If I move to E1,